So you guys are H4. So I'm expecting few Yes. more students. Okay, let me begin today's session. So let others join meanwhile. Okay, people are joining. Okay, nevertheless, I have started recording. So if somebody misses something, we can go back and the recording. Okay, let me begin today's session. First of all, I want to thank you guys all for coming on this holiday. Uh, this is truly appreciable. This is a large students I am seeing on holiday. Thank you once again. Uh, okay, so let me start with the agenda of this particular lab session. So the name of experiment is design of line follower robot. And the aim is to design a line follower robot which autonomously traces a predefined path. So in this, how many of you have ever seen line follower? I mean, what it does? Have you truly know what it does? So I have currently with me, uh, with Scratch, I have actually made a line follower. Uh, okay, this already I meant. So this is unfortunate that we are not meeting on offline. Otherwise, I could have shown you its whole working, how it works. Anyways, the the moment we, I mean, uh, at least we could know the working. How does this line follower work? Anyone know? I mean, how? I mean, what is line follower from this group? Yes, no, anyone? So that I can get a feedback. Okay, no one. Okay, so Actually, yes. follow specific path. Fine. So let me motivate you guys by just running a YouTube video. And what is this actually? It looks like. So this is actually, this looks something like this. So I would say this is a very beautiful amalgamation of all three, four departments. The electronics part is involved, electrical is involved here, mechanical, computer, ICT, everything is beautifully amalgamated through this particular lab setup, this line follower setup. And what it does actually here is uh, it it gains some intelligence. It gains some intelligence, and
based on that intelligence, and it perceives something from environment through these sensors. It perceives something, it has microcontrollers, it takes some decision, and based on that, it actuates your wheels. And this is a very beautiful combination of all branches. And that is why I like these kind of experiments. So alone coding, and you sit in an AC environment and you code it, and it's very boring. So when you code it on some hardware and it does something, it actually excites you. It wakes you awake at nights, right? So not only these kind of experiments, just to motivate you, I have, so this is an intelligent system. I mean, close to intelligent, not entirely. I have another setup also, so which currently I'm making. So this you can see over here is uh, this is a pick and place robot, which I'm making. So this has servo motors, and this actually actuates, and this can pick something and place something. It can rotate also. It can rotate, twist also. Okay, so currently I'm in a phase to give this guy intelligent, in some intelligence, in the sense that let's suppose you have a pen, and let's suppose you have a battery, and I will tell that, okay, go and pick the pen, not the battery. So it should go and recognize which is a pen, and then it should grab it and pick and place somewhere, and which is essential uh, in any robotic assembly line application. Let's suppose your father is having certain factory, और वहाँ पे कई वर्कर्स हैं, वो अगर हाथ से करने लगे तो बहुत टीडियस जॉब है, दिन रात वो हाथ से उठा रहे हैं. लेट्स सपोज बॉटल मेकिंग आप बना रहे हैं, बॉटल में ढक्कन लगा रहे हैं, एक आदमी ढक्कन लगा रहा है, एक आदमी रोल कर रहा है, एक आदमी कुछ कर रहा है. So this is not a good way to do that. So instead of that, you can make some robots and do the job, okay, intelligently. So currently I'm making this. So just to motivate you guys, since you guys are better than mechanical students, and I would like to put this in public domain, tell this in public domain that currently I'm doing computer vision, related project on this, in order to pick and place intelligently what to pick and what to not. This particular project. If you guys are interested, you can come and meet me in my cabin E205. I sit in E205 cubicles, faculty cubicles, and you can anytime you can meet me and we can work together. Okay, so as long as this experiment is concerned, so let's focus on our experiment, today's experiments. I won't take much time since this is the Diwali holiday. I'll leave you guys early, probably in half an hour. So you guys know, I mean, just saw how, I mean, it is moving in certain line. Fine, it is following some certain path. So where does the intelligence come from? So my first question is, what is intelligence? Anyone? Why we are intelligent? So we make decisions, but we not only we make decisions, we sort of perceive first. Okay, environment से हम कुछ perceive करते हैं. Let's suppose I want to grab this particular battery. So I know how far it is. My eyes will look and I'll sense some depth in it, XYZ coordinate, and based on that, my brain takes decision. Okay, and decision के बाद क्या? Then your brain tells your shoulder muscle to lift up and then grab it, or your uh, elbow and sorry, whatever. Yes, elbow and shoulder, and then wrist, and then claws to do something. So in any intelligent system, you should perceive first. You should have three elements. You should perceive first, then you take decision based on that, and then actuate. Okay, so we humans are also intelligent. I mean, that is why we have survived through our evolutionary tree. So करोड़ों साल पहले आप, अरबों साल पहले आप देखेंगे, आई मीन मिलियंस ईयर्स इवोल्यूशनरी एडवांटेज में, तो हम ह्यूमंस जैसे, लेट्स सपोज वी आर लेफ्ट अलोन इन जंगल, सो वी हियर समथिंग, कोई some predator is there, I mean it is making some voice, then we make ourselves attentive, okay, through the ears, that is our sensor. Okay, and then
our brain takes decision either fight or flight. So you need to either fight that predator or भागो, या तो लड़ो या भागो. So in order to do that, certain hormones आपके रिलीज होंगे मसल्स में, एड्रेनलिन वगैरह, और वो मसल को स्टिफ बनाएंगे इन ऑर्डर टू रन फास्टर. वो भागना शुरू करेंगे और आप इवोल्यूशनरी एडवांटेज में आप आगे आगे आप सर्वाइव किए हुए हैं, एंड दैट इज हाउ वी केम एक्चुअली. ठीक है. सो वो आपको और इंटेलिजेंट भी हो गए क्योंकि हम एक एक्शन ले रहे हैं इंटेलिजेंटली. हमें भागना है या फिर हमें डिसाइड करना है भागना है या लड़ना है. सिमिलरली इस नॉन लिविंग थिंग को भी हम लोग इंटेलिजेंस दे सकते हैं इन सम सेंस. ओके. सो द फर्स्ट थिंग हियर इज देयर आर टू सेंसर्स, वी कॉल इट एज IR सेंसर्स. ओके. ये कैसे काम करता है बताएंगे अभी. And these IR sensors are actually the eyes of this system. आंखें हैं इसकी. ठीक है. It looks something from environment and takes and gives signal to your microcontroller. यहाँ पड़ा हुआ है microcontroller. Okay. So microcontroller को वो signal send करेगा. Okay, do something based on these eyes. You do something. और वो क्या करेगा? Actuate करेगा. पर वो एक्चुएट करने के दौरान वो पाथ कैसे फॉलो कर रहा है उसका पूरा अब हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर देखते हैं. ठीक है. लेट मी गो वन बाय वन. So equipments required are Arduino Uno. Hopefully some of you have might have known this. Then car chassis. So chassis मतलब उस जिस कार जिस पे आपका लगा हुआ है. In this case I have a wooden board जो कि मेरी बेटी ने मेरे लैपटॉप का ड्रॉअर तोड़ दिया तो उससे निकाल के मैंने ये बनाया. This I have done it myself, this whole thing. Then single shaft motor. These are your motors, yellow one, and the wheels, and then IR sensors, which is here, and L293D motor driver. Actually, I should have written driver here. Motor driver. So what it does, it controls. Usually Arduinos work on 5 volt, but your motors work on 9 to 12 volt. Okay, 9 to 12 volt, and that is why you need some drivers to actuate it in order not to flow higher currents or voltages in circuits in order to damage it. Also to control in directional sense. आप counter clockwise घुमाना चाहते हैं, clockwise घुमाना चाहते हैं, ये सारा चीज इस पे से कंट्रोल किया जा सकता है मोटर ड्राइवर के थ्रू. तो एक एडिशनल कंपोनेंट है. ऑब्वियसली द कास्टर एंड द 3D व्हील. सो ये वाले नॉर्मल व्हील्स हैं और ये वाले कास्टर व्हील है, आगे वाला. ठीक है. तो आप लोगों ने वो जस्ट वीडियो यू हैव सीन. सो लेट मी गो थ्रू हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. So you can see over your sensors here. There are two modules, one sensor, one second sensor. So every sensor has two modules. One is transmitter and one is receiver. One is transmitter, one is receiver. One is transmitter, one is receiver. Okay. So in this diagram you can see. So you have transmitter. So you have similar your TV remotes have IR sensors so that you switch on your TVs. So यहाँ से एक infrared waves निकलेगा. If it is light colored, if at all it is light colored, your surface is light colored, it will be reflected back and given back to the receiver. Case 2, if your surface is black, your transmitter transmits some wave, but it won't be reflected back because of the property of the black surface. It absorbs all the waves. Based on this mechanism, पहले वाले केस में जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है और ये रिसीव भी कर रहा है, सो यू आर गेटिंग 1 1 सिग्नल, बट इन अनदर केस यू आर गेटिंग 1 0 सिग्नल. So based on 1 1 and 1 0, you do something. What you do? Let me show it to you here. Okay. So what you have to do? So let's suppose आपके पास आपका जो लाइन था वो स्ट्रेट लाइन था अभी. ठीक है. स्ट्रेट लाइन था आपका, ऐसा स्ट्रेट लाइन था और स्ट्रेट जा रहे थे आप आराम से. तो जा क्यों रहे थे? So आपके पास राइट सेंसर है, लेफ्ट सेंसर है. So right sensor is on. What it is seeing? White patch. Left sensor also is seeing white patch. So left and right both sensors are hitting white patch. तो दोनों 1 1 सिग्नल दे रहा है. Okay, one receive, one receive, one transmit, one receive, transmit, receive. Both are 1 1. So based on 1 1, ये क्या कर रहा है? Let me go back here.
let me take the pointer. So this is on white and this is also on white. So अगर ये white है तो इस वाले wheel को keep on rotating. अगर ये भी white है keep on rotating this also in same omega. So क्या होगा, दोनों omega से घूम रहे हैं दोनों wheels and it will keep following black line. Okay. अभी क्या होगा, आपका black line आगे से मुड़ना शुरू होगा. Okay, focus this figure first. Focus on this figure first. Okay. So अभी क्या है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए. राइट जो सेंसर है वो अचानक से क्या होगा, ब्लैक लाइन देखेगा. बट जो लेफ्ट वाला सेंसर है वो ऑलवेज व्हाइट देख रहा है. तो ये सेंसर इसको बोलेगा, भाई तुम तो कीप ऑन मूविंग, भाई तुम कुछ मत करो, तुम मूव करते रहो. ये वाला सेंसर इसको क्या बोलेगा, भाई यू स्टॉप इट, स्टॉप, यू स्टॉप. द मोमेंट इट स्टॉप्स एंड इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, क्या होगा, ये वाला मूव, ये वाला चलते चलते रुक गया और ये वाला रोटेट कर रहा है. तो क्या होगा, एक टेंडेंसी होगा, आप लोगों ने कार में किया होगा या फिर बाइक में व्हीली वगैरह आपने किया होगा. जो लोग व्हीली करते हैं, बाइक एडवेंचर्स करते हैं, एक अगर बाइक का एक चक्कर रोक देंगे और एक को तेजी से रोटेट करेंगे, वो ट्राई टू टर्न बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इन सिमिलर फैशन ये वाले फिगर पे फोकस कीजिए. अगर आपका ट्रैक जो है लेफ्ट मुड़ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला सेंसर सीज द ब्लैक लाइन फर्स्ट एंड इट गिव्स सिग्नल 0 1. ओके, देन स्टॉप इट. और ये वाला वाइट ही देख रहा है, देन कीप रनिंग. कीप रनिंग के कारण क्या होगा, इस पे एक मोमेंट लगेगा ऐसा और वो मूव कर जाएगा. सो दिस isn't it beautiful? I mean, you have the beautiful combination of electronics, electrical, mechanical, computer science. Obviously आप कोड कर रहे हैं, ICT, everything, very beautiful combination of every branch. और बीच वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि if it is straight black, nobody is seeing black, so both rotates freely and keeps on moving. And this is what you have seen in, this is what you have seen in this video. It keeps on. Let us watch it once again. So yes, this is the working principle of any line follow robot. Obviously we have circuit diagrams as well. This is the circuit diagram, but we cannot finish it in one day because this lab is not meant to finish it one day. So the max we can do here is we should know the working principle and slight of circuit diagrams and coding. I'll give you a brief in another 10 minutes and then we'll leave. This is the coding part and this is the fine. So let me give a brief about what these microcontrollers or Arduinos are all about. So Arduino is a special open source physical development computing platform that uses microcontroller in order to take some decision. So ऐसा ही बोर्ड दिखता है आपको, इसमें माइक्रोकंट्रोलर्स होते हैं, एटमेगा के हैं. यहाँ से आप कोडिंग के लिए आप इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं आपके कंप्यूटर से. दिस इज पावर सोर्स, दिस आर डिजिटल पिंस, दिस आर एनालॉग पिंस एंड फ्यू अदर सेमीकंडक्टर्स. सो सेमीकंडक्टर्स हैज अ ब्यूटी. आई मीन एक आप एक नॉन लिविंग थिंग को आप लॉजिक दे पाए. आई मीन दिस इज द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन दैट ह्यूमन मैनकाइंड हैज एवर गॉन. जस्ट बिकॉज जस्ट सेमीकंडक्टर्स आपने ऐसे बनाया उसमें डोपिंग करके कि इलेक्ट्रॉन एक बार जा पा रहा था फिर नहीं जा पा रहा था, तो आपने नॉट गेट बना दिया. जा रहा है 2 बार जा रहा है, आपने एंड गेट बना दिया, XOR गेट बना दिया, XOR गेट बना दिया. आप तरह तरह का लॉजिक्स आप डेवलप करने लगे जस्ट बिकॉज just to make sure that you are able to control the electron flow in certain fashion. Okay, so this is beautiful. I mean humans have gone this evolution में इतना दूर पहुंच पाए हैं just because कि हम लोगों ने नॉन लिविंग थिंग को
इंटेलिजेंस हम लोग दे पाए। और अभी ये 001 भी अभी जो है आउटडेटेड हो गया है इंटेलिजेंस। अब हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग में चले गए हैं। द स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट जस्ट 0 and 1। ओके, जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्टेट्स जो होते हैं सुपर पोजिशन वाले स्टेट्स होते हैं। देख, कभी वो 0 1 में नहीं होता है। देयर आर सुपर पोजिशंस ऑफ एवरी स्टेट्स। ओके, सो वो बीच के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो बहुत ये पूरा एक सब्जेक्ट है। आई मीन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू रीड क्वांटम कंप्यूटिंग। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमर्जिंग ब्रांच, ठीक है, फ्यूचर में। तो उसमें और हाईली इंटेलिजेंट हम लोग बीइंग बना सकेंगे प्रोबेबली, इससे भी बेटर। फाइन। सो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, मेगा, लिली, नैनो, ऊनो, बेस्ड ऑन नीड। किसी में कम कंपोनेंट्स होते हैं, किसी में ज़्यादा। बेस्ड ऑन नीड ये काम करते हैं। आर्डिनो ऊनो में 14 डिजिटल पिंस होते हैं, वो भी आईओ पिंस होते हैं। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट आर आईओ पिंस हियर? एनीबडी न्यू? यस, एनीवन? नो? यस? Input output pins or यस। सो इनपुट आउटपुट का मतलब है कि योर पिंस विल बी ट्रीटेड एज इधर इनपुट और आउटपुट और बोथ वेज। ठीक है, दोनों तरीके से आप काम करवा सकते हैं चीज़ों को। तो एनालॉग पिंस होते हैं, यहाँ पे ये एनालॉग पिंस हैं, वो 6 होते हैं एनालॉग पिंस। सेंसर से कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं तो यहाँ पे हम रीड कराते हैं, और डिजिटली कुछ आ रहा होता है तो यहाँ कराते हैं। USB पोर्ट है, reset button, power connector, TX, RX, LEDs, this and that. Fine. So in order to code that, we have an environment called Arduino IDE. So ये एक सॉफ्टवेयर है जो C++ पे काम करता है। उसके यूजुअल लाइब्रेरीज जो C में आप लोग पढ़े होंगे वही यूज़ होता है, और ये फ्री है। यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं और ये कोड को हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को पहुँचाते हैं, Arduino को। तो इसके बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वी हैव वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। तो 2 सेगमेंट होते हैं, एक सेटअप एंड लूप। तो सेटअप में हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार बता देंगे कि भाई ये पिन नंबर 13 नंबर का पिन मेरा IR सेंसर है, 8 नंबर का पिन मेरा राइट वाला IR सेंसर है, मोटर जो है इस वाले पिन में लगा हुआ है, ये वाला इसमें लगा हुआ है। एक बार सेटअप कर दिए, एंड देन वी विल डिसाइड इन वॉइड लूप दैट कि भाई 0 1 रहेगा तो ये घुमा देना, 0 0 रहा तो मत घुमाना। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कोडिंग हम यहाँ एक क्लास में हम नहीं करवा पाएंगे, बट जस्ट हम लॉजिक बता रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल को हम लोग ब्यूटीफुली कंप्यूटर साइंस के साथ अमलगेमेट कर रहे हैं और एक ब्यूटीफुल चीज़ हम लोग बना पा रहे हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम लोग ये ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, अदरवाइज ऑनलाइन में हम ये चला के दिखाते हैं आपको। ठीक है, बेसिक कोडिंग इंस्ट्रक्शंस वही सी का तरह ही होते हैं। पिन मोड्स होते हैं इसमें, पिन मोड 13 आउटपुट का मतलब विल टेक इट एज आउटपुट। आउटपुट को ऑन करना है, ऑन करना मतलब हाई करना होता है यहाँ पे, और लो करना है मतलब ऑफ करना होता है। दिस इज हाउ दे टेल इन दिस आर्डिनो लैंग्वेज। आगे देखते हैं। सो एक एलईडी ब्लिंक कराने के लिए, जैसे दिवाली लाइट्स आप बनाना चाह रहे हैं, सो एक एलईडी सिंपल एक प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है इसका। एनोड पिन 7 नंबर पिन पे लगा हुआ है, कैथोड जो है ग्राउंड है। सर्किट कंप्लीट हो गया, और ये 4 लाइन का कोड लिखने के बाद आप इसको एज एलईडी को आप ब्लिंक करा सकते हैं एज ए दिवाली लाइट। इसको इंटेलिजेंटली आप ऑन ऑफ करा सकेंगे। ठीक है, लाइक योर दिवाली लाइट्स। सो लाइन फॉलोअर्स आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे? एनी डाउट इन लाइन फॉलोअर? एक्चुअली we may yes, ask questions. हाँ, thank you. If I am comprehensible through online as well. मैं आप लोग को समझा पाया और आप लोग छुट्टी में आए और समझ पाए, इसके लिए भी थैंक यू। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, और इससे ज़्यादा अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे इस क्लास में, क्योंकि ये जो बनाना है इट इज़ क्वाइट टीडियस इन द सेंस मंथ्स लग जाते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, so anyways, if you guys are interested, and this is also we have done, some of my students have done this, uh, so robotic आर्म बना रहे हैं। so अभी robotic आर्म में हम लोग विजन बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, so जैसे कि मुझे बॉटल का कैप ही उठाना है, तो वो समझ जाए कि दैट इज अ बॉटल का कैप, नॉट माउस।
और उसको पिक करना है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग कर रहे हैं। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर, because I'm telling you this guys, I mean telling you guys this because you guys are much better than mechanical students. What I feel, you guys have better logic and better understanding than mechanical and other students. You are good at coding as well as these things understanding. So I would like to invite in this public platform that if you guys are interested, then you can meet me and we can make lots of IoT devices in future. Thank you from my side, if no questions. And thank you for coming on this holiday. Happy Diwali. Enjoy your holiday. ठीक है? If no questions, I'll take attendance and then you guys can leave. Recording is also available. You can, if you guys, if your friends have missed it, you can rewatch it again. Okay. Thank If you, no sir. questions, Happy Diwali. thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.